morning everyone, I am Kirinal Dangar. I am Utpade Pratham. We students of 11th Commerce CBSE are here to present a drama on activity. As we all know that nowadays food blogging and street food exploring is trending a lot. This food blogging and street food exploring among us teenagers and so-called Gen Zs has either become a career option or a passion for them in this today's world. Just like that, 4 Gen Z friends have decided to explore different Indian street foods. But little did they know that they would come over such an amazing shop in the middle of nowhere. यार हम चारों दिन कटते गुजरे लेकिन अभी तक हमें कोई भी टेस्टी फूड स्टॉल नहीं मिला जहाँ पे हम स्ट्रीट फूड ब्लॉग के लिए कंटेंट बना पाए. Hey guys, look at there. I can see a shop. Oh, that's one. It's looking like a कबाड़ी वाला शॉप. हमें वहाँ क्या मिलेगा? बट गाइस एक और वहाँ चल के देखते तो है, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए. वैसे बहुत भूख लग रही है. हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है. हाँ मुझे भी. ओके देन शॉप पर कोई है? बोलिए क्या चाहिए? कुछ खाने को मिलेगा आपकी शॉप पर? हम सभी को बहुत भूख लग रही है. हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? खाने की शॉप पर खाना नहीं तो कपड़े मिलेंगे. ये शॉपर कितना खड़ूस है, इसको कस्टमर से ठीक से बात करना भी नहीं आता. इट्स ओके है पर पूछते तो खाने में क्या है इसके पास. आपके पास खाने में क्या मिलेगा? दही, अचार और पराठे. और कुछ नहीं है आपकी शॉप पे? नहीं, इतना ही है. खाना तो खाओ ना, चले जाओ. मैं बहुत अच्छे से जाता हूँ. यूट्यूब पर फ्री का खाना खाने के लिए ही आते हो. रुको, ये मेरा पोता है, उसकी बातों का बुरा मत मानो. दुकान से भी कमाई नहीं हो पा रही, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में रहता है. आप सब बैठो, मैं आप सबके लिए दही, अचार और पराठे लेकर आती हूँ. यार ये अचार तो बड़ा टेस्टी है. हाँ, मैंने भी ऐसा अचार कभी नहीं खाया. यस इट इज टू यमी. दादी ये अचार आपने बनाया है? हाँ ये अचार मैंने बनाया है. ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया था. ये एक सीक्रेट रेसिपी है, मैं उसी से अचार बनाती हूँ. दादी आप इतना अच्छा अचार बनाती हो, फिर भी आपकी शॉप पर कोई कस्टमर क्यों नहीं आता? पहले ऐसा नहीं था, दुकान बहुत चलती थी, लेकिन जब से 1-2 अचार की कंपनी खुली है तब से दुकान बिल्कुल नहीं चल रही. ऊपर से मेरे पोते का व्यवहार तो जानते ही हो, पुराने ग्राहक तो रहे ही नहीं. जो नए ग्राहक आते वो कभी वापस नहीं आते. दिन भर में 1 या 2 ग्राहक आते, घर खर्च भी निकालना मुश्किल हो गया है. दादी डोंट क्राई. वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंसाबा है. अच्छा हंसाबा. गाइस आई थिंक हमें दादी की हेल्प करनी चाहिए. हाँ, कुछ पैसे देकर हमने दादी की अभी तो हेल्प कर दी है, लेकिन हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. लेकिन दादी की हेल्प कैसे करें. हमें उनकी छोटी सी दुकान को बड़ा करना होगा, हमें उनके अचार को फेमस करना होगा, हमें नए नए कस्टमर्स ऐड करने होंगे. वी हैव टू इंक्रीज द सेल. हाउ इज पॉसिबल. It is only possible with the help of marketing. I think you all don't know the power of marketing. Yes, you are right. There are so many stories of business houses who were facing problem like low sale and decreasing market share, but now they are successful. They are unicorn. But how it was possible? It was only possible with the help of marketing. I think you can say that marketing is the 8th wonder of the world. But ये सब स्टार्ट कब से करना है? अच्छे काम में देरी कैसी, आज से ही शुरुआत करते हैं. Morning everyone, I am Kirinal Dangar from grade 11th Commerce CBSE Greenville International School, and today I will be interviewing the students who has contributed in this activity. Hello, what is your name? Hello, my name is Priya Charoda from grade 11 Commerce CBSE. And what have you contributed in the making of this activity? I designed the logo for the shop, Hansaba Kacha. And how much time did it take? It took almost 2 to 3 hours. That's impressive. Can you please tell us why logo for the shop is important? It creates different identity of the product which helps in buying and selling of the product. It makes visualization better for the product. Thank you so much for giving us a helpful information. Thank you. Good morning everyone, I am Saranya Divyam from class 11th Commerce Greenville International School. Here I am asking some question to one of the students who has contributed in the promotion process of Hansaba Kacha. Hello, what is your name? My name is Tim. I'm studying 11th Commerce. What are you doing here? I'm making label for Hansaba Kacha, and this label will stick on the bottom. Will you tell me what is use of label in the product? Label provides valuable details of the product like price of product, weight of product, manufacturing date of product, expiry date of product, and ingredients are used in this making process. Thank you for giving valuable information to our viewers.
ब्रांड नेम भी हो गया, लोगो डिजाइन भी हो गया, लेबल डिजाइन भी हो गया, लेकिन अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट एरिया पे फोकस करना होगा। और वो है क्या? वो एरिया है कस्टमर्स फीडबैक। आओ कस्टमर फीडबैक क्या है समझते हैं। देखो दोस्तों, दादी की शॉप पर कस्टमर आने लगे। चलो देखते हैं कि हमारी मेहनत कितनी रंग लाई। हाय गाइस, हाय, आपका नाम क्या है मेरा नाम वंश है और आप कहाँ से हो मोरबी से। और आपको इस शॉप के बारे में कैसे पता चला? इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी, इसलिए हम सब इधर खाना खाने के लिए आए हैं। थैंक यू। हाय गाइस, हाय आपका नाम क्या है जी और आपको अचार का कौन सा टेस्ट अच्छा लगा? पिक्सल। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आर्यन। आपको अचार का टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। आप इस अचार को 10 में से कितना रेटिंग दोगे? 9। हेलो, आपका नाम क्या है? अंकित। आप यहाँ शॉप पे पहली बार आए हैं? मैं पहली बार नहीं, दूसरी बार आया हूँ। पहले भी मैं आ चुका हूँ, पर पहले इधर बहुत सारी गंदगी थी। अभी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है और बैनर भी लगाया है, पैकेजिंग भी अच्छा किया है। तो आपको क्या लगता है कि पहले से ज्यादा क्या किस चीज में इम्प्रूवमेंट है? पहले से ज़्यादा सारी चीज़ें में इम्प्रूवमेंट है। आप अगर अचार को रेटिंग देना चाहेंगे तो पहले आपने अचार चखा था और ये अचार, आप दोनों को क्या क्या रेटिंग देना चाहेंगे? पहले मैं 2 रेटिंग देना चाहूँगा, 10/10, और अभी के मैं 9 देना चाहूँगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा पहले यहाँ छोटी सी दुकान थी जहाँ पे कोई कस्टमर्स भी नहीं आते थे और अब ये दुकान इतनी बड़ी हो गई और कस्टमर्स भी आते हैं और अच्छे अच्छे फीडबैक देके जा रहे हैं। तो ये सब कमाल है मार्केटिंग का। हमने मार्केटिंग के कंपोनेंट्स ऐड किए जैसे कि पैकेजिंग, लेबलिंग, लोगो डिजाइनिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। आखिरकार दादी की दुकान चल पड़ी। दादी का अचार फेमस हो ही गया। 4 दोस्तों की मेहनत ने कमाल कर ही दिया। पर ये सब हुआ कैसे? वाह, इतना कुछ हो गया तुम्हें अभी तक पता भी नहीं चला। ये है कमाल मार्केटिंग का। मार्केटिंग का? पर यहाँ मार्केटिंग ने किया क्या है? जो सब तुम अभी देख रहे हो ये सब मार्केटिंग का ही कमाल है। पर वो कैसे? आओ समझते हैं। Good morning everyone. My name is Malvika Fultaria. And my name is Kirinal Dangar. We are delighted to have this opportunity to speak with you today. With this presentation, I aim to give you a clear and insightful look into the world of marketing, its strategies, tools, impact, and relevance in today's dynamic world. I hope this presentation helps us all understand the basics and importance of marketing. Thank you for being here today. So let's start. First, let's understand what is marketing. Marketing means promoting or selling of products or services. In simple words, marketing is how a business connects with its customers and encourage them to buy. Maggi noodles is a great example how marketing works in real life. Maggi noticed that people, especially kids and busy adults, wanted a food that is quick to make, tasty and affordable. Thus, Maggi offered 2 minutes instant noodles and promoted it with her catchy slogan, "Bas 2 minute." They advertised on TV, pulled it everywhere, and added new flavors to keep its customer interested. This is how Maggi used marketing to become a popular household name. Next is market research. Market research plays a vital role in understanding marketing. Market research includes few very important steps. Let me walk you through it. First, it helps assess the range variety available in the market. By analyzing different prices, weights and color of competing products, we can understand what variations are being offered and what gaps we might be able to fill. Next, market research gives us insight into the level of competing for the product we plan to launch. Knowing who our competitors are, what they are offering, and their strategies is essential for carving out our space in the market. In conclusion, market research not only helps us understand the competition and demand, but also shapes our products' placing, positioning, and strategy in the market. Next, purchasing. Before any business purchases raw materials, there are few points that we must keep in mind for smooth operations and cost efficiency. These are listed here. Size of order, selection of supplier, quality of product, and transportation cost. Now let's see what Hansaba was avoiding while purchasing of raw materials for her achar. First, she was purchasing raw materials in very few quantity, which leads to high purchasing cost. Therefore, we suggested her to purchase raw materials in bulk quantity.
Second, selection of supplier. Selection of supplier means choosing the most suitable vendors. So we suggested Hansaba to purchase raw materials who can provide raw materials in proper time. Next, quality of product. She was purchasing raw materials from where she was not getting good quality of product. So we suggested to purchase goods which are government certified. Fourth, she was purchasing raw materials from a supplier who was far away from her shop, which leads to high transportation cost. Therefore, we suggested her to purchase raw materials from nearby supplier. In conclusion, it helps her to reduce the cost of production and helps her to save time. Now, next we have production process, which includes 5 steps. First, selection of raw material. We begin by choosing high quality material which is fresh and safe for our product to ensure the final productivity of our product. In the case of Hansaba, she needed high quality oil, fresh vegetables and some spices, etc. Second, cutting and preparation. Raw materials are thoroughly cleaned, chopped or sliced as per the requirements to prepare them for next stage. Sun drying. Prepared materials are then naturally dried under sun to remove the moisture from it. Fourth, roasting. After drying, the materials are roasted to improve their taste, texture and aroma. Fifth, mixing. In the end, all the material are then mixed together and made the final product. Next, packaging. It means wrapping or enclosing the product to protect it during storage, sale and transportation. There are 3 types of packaging. First, primary packaging means directly holds the product. For example, bottle or can. Second, secondary packaging means outer wrapping for grouping or branding. Example, box or carton. Third, tertiary packaging means bulk handling in transportation or storage. Example, shipping box or pallet. Importance of packaging. It protects the product from damage, provides valuable details about the product, attracts customer through its various designs, and helps in the handling and the transportation. Labeling. Next we have labeling. Importance of labeling. It provides detailed information regarding product, helps in promotion of product, ensures legal compliance, etc. Next, branding. It's a process of creating name, image or identity for a product or a company to differentiate it from other competitors and to build customers' loyalty. So let's see what Hansaba was missing in her product. So the product don't have any name, image or symbol, so the other manufacturers could easily copy it. So let's see what we suggested to Hansaba. For the branding of Hansaba ka achar, we suggested her to keep an easy and simple name which can be remembered by the other people. And for the logo, we decided to create a unique logo which has various colors and which is eye-catching for the customers. So now Hansaba's product has proper labeling, has attractive packaging and strong branding. The only thing remaining is pricing. So let's know how pricing works. Pricing is the process of deciding what a customer must pay to buy a product or a service. It directly affects sales, revenue and market positioning. To conclude, marketing is not just about selling a product. It's about understanding the customers, creating values, building trust, and staying ahead in a competitive world. From branding and packaging to pricing and promotion, every step plays a key role in a product's success. Thank you all for being here today. I hope this presentation helps you to understand the core concepts of marketing. Thank you. Now, I would like to call upon the students who has contributed in this making of activity upon the stage, please. आईडी रेडी किया, किसी ने जो है नेम सजेस्ट किया, स्क्रिप्ट में हमने कई बार चेंजेस भी लेकर आए कि सर ये स्क्रिप्ट हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इतना काम करने के बाद 8 to 10 डेज का ये मेहनत है, एफर्ट है जो भी आपके सामने है, बट कुछ भी कॉपी नहीं है, सारा का सारा नया है, एकदम क्रिएटिव है। थैंक यू।